सर आप स्टार्ट कर दें प्लीज। अब जिनको आना रहेगा वो आएंगे। अच्छा, एक चीज आलोक जी, मैं ये बता रहा हूँ, कल भी हम 2 बजे क्लास लेंगे क्योंकि कल सुबह मेरे अर्जेंट मीटिंग था, मतलब तो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही ले लीजिए। ओके, दैट्स परफेक्ट। वेल, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी तक जो है आपके फर्स्ट यूनिट के पहला चैप्टर डिस्कशन किए, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और ये टूरिज्म कैसे डेवलप हुआ फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल एरा टू द मॉडर्न पीरियड टू द प्रेजेंट एरिया। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इज नॉट इट्स इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है जब वो डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो है एक हिस्ट्री है, पीरियड्स में कैसे वो डेवलप हुआ एंड देन इट हाउ इट केम टू द मॉडर्न पोजीशन। सिमिलरली टूरिज्म जो इंडस्ट्रीज है वो भी इसके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और वो कैसे डेवलप हुआ। आज हम प्रेजेंट जो टूरिज्म इंडस्ट्री, जो उसको एक इंडस्ट्री के रूप में माना जाता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री हुआ कैसे, तो इसके भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो यदि आप टूरिज्म हिस्ट्री को देखें तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है आपका एम्पायर एरा, जो कि हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेके फिर इजिप्ट, फिर ग्रीस और रोमन पीरियड्स को इंक्लूड करते हुए जो उस पीरियड में जो टूरिज्म जो डेवलप हुआ,
तो उस एरा को हम कहेंगे एम्पायर एरा। ये टूरिज्म शब्द जो है ये इट के मच लेटर ऑन। पहले हम इनको टूरिस्ट नहीं कहते थे और हम टूरिज्म हम इनको कहते थे ट्रैवलर्स। तो जब हम इस एरा की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे वर द ट्रैवलर्स। तो फर्स्ट पीरियड है वो आपका एम्पायर एरा। सेकेंड पीरियड है जो उसको कहते हैं मिडिल एज और यू कैन से मिडिल पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, इस पीरियड को डार्क एज से भी रूप से कहा जाता है या जाना जाता है। उसका कारण है कि इस पीरियड में रोमन एम्पायर जो है खत्म हुआ, टूरिज्म उतना अधिक चला नहीं, तो इसको हमारे टूरिज्म अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस एज को हम लोग जो है डार्क एज भी कहते हैं। थर्ड आपका जो है वो है रेनेसेंस एरा। This is the time when the art and architect developed। और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसा पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एरा। इस पीरियड में टूरिज्म बढ़ा ही नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप्ड हुआ। और आपका फोर्थ है दैट इज एन इंडस्ट्रियल एरा। दिस इज द टाइम due to the industrial revolution, with the advance of science and technology, the mode of transportation has gone up. Steam train से transport होना शुरू हुआ, by road, even the people use the aircraft. So that is the period when the mode of transportation has gone up. And the last one, that the fifth one, is a modern era, जो आज हम प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम टूरिज्म इंडस्ट्री को देखते हैं। फर्स्ट है एम्पायर एरा। यदि आप प्री हिस्टोरिकल टाइम को देख लीजिए तो पहले जमाने में लोग जो है वो ट्रैवल करते थे, बट एट द टाइम व्हाट वाज द बेसिक ऑफ देयर ट्रैवलिंग? द बेसिक ऑफ द ट्रैवलिंग वाज टू सर्च ऑफ फूड। फूड के लिए, भोजन के लिए वो जो है एक दूसरे जगह पे वो ट्रैवल करते थे। सेकंड आप ये कर सकते हैं और इसका और एक उदाहरण आप कर सकते हैं कि टू एक्सपेंड द टेरिटरी, जो रूलर्स थे वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए दे यूज्ड टू ट्रैवल। और आप ये कर सकते हैं टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज, दुश्मनों से छिपने के लिए दे पीपल यूज्ड टू ट्रैवल। और भी बहुत रीजन है, बट दिस आर द बेसिक रीजन दैट द पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरा। लेकिन जो रियली एज ए बिजनेस, टूरिज्म एज ए बिजनेस, ये स्टार्ट हुआ आफ्टर द इजिप्शियंस। आप कहते ड्यू टू द ग्रीस एंड ऑल्सो फॉर द रोम। इजिप्शियंस जब इन्होंने पिरामिड बनाया ड्यूरिंग 2700 to 1700 BC, it fascinated the people from the local area, from the to the surrounding area to come and see it. Or they also built some museums. तो जिससे ये जो है सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस इज इजिप्शियंस हु स्टार्टेड द कांसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग। फिर आप कह सकते हैं ग्रीस। ग्रीस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ग्रीस वॉज वेरी फेमस फॉर द इंटरटेनमेंट, फॉर मैजिक शोज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट फ्रॉम एथेंस द ओलंपिक स्टार्ट्स। तो जब ये ओलंपिक शुरू हुआ, those who were travelers, they were the participants जो कि स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, and some were the visitors or spectators जो उस स्पोर्ट्स इवेंट को देखने के लिए गए थे। So this is the time when you can say the travelers
started moving from one place to another, जिसको हम हिस्टोरिक और ये एम्पायर एरा में कहते हैं कि it is just for them that the people started travel. आप जब कहीं पे ट्रैवल करेंगे जानते हैं, in a basic way you need two more things or two basic things you need when you travel. First and the most important thing is that you need a money. क्योंकि आप जब कहीं पे जाएंगे obviously you have to spend money, you have to buy. तो it is a Sumerian who brought the concept of money, or you can currency. Therefore that helped the people to use the money while traveling. तो सबसे पहले चीज है कि you need currency or your money to travel. And the most important thing is that you need to communicate. एक language होनी चाहिए. But during that period, Latin was the common language. Therefore, it is for the Latin language and for the currency which was by the Sumerian, it's helped the travelers to travel in the surrounding areas or in the nearby. उस समय far away traveling बहुत अधिक नहीं करते थे. और कहा जाता है कि Egyptians, they are the one, they also developed ships. जब उन्होंने ship develop किया, तो obviously they want to travel far away from their home to the other destination. जब आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इट इज वेरी इजी, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द लैंड यू कैन सी द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन. जब आप शिप से नेविगेशन करेंगे व्हेन यू आर ऑन द वॉयजेस, तो आप जब समुद्र में, तो यू डोंट नो द डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शंस यू आर गोइंग एंड व्हिच डायरेक्शन इज योर डेस्टिनेशन. तो उस समय द इन्वेंशन ऑफ द कैंपस, जो कैंपस नीडल हम लोग करते हैं जिससे हम लोग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उस कैंपस के कारण जो है समुद्री नेविगेशन जो है वो इजी हो गया. तो लोग जो है ये सिर्फ अपने लिमिटेड एरिया में ही ट्रेवल नहीं करते थे, बल्कि they used to go far away from that area, and the mode of transportation during that period was the water transportation, that which you can call as a ship. So this is the period when you can say people travel from their own place to the surrounding areas and far away using the mode of transportation that is ship. इस पीरियड में कहा जाता था लीगल सिस्टम वाज इज बेटर, क्योंकि लोगों के पास जो लोग पीपल यूज्ड टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयरफॉर दैट आल्सो हेल्प देम टू पीपल टू ट्रैवल. तो एम्पायर एरा जो है दैट वाज द टाइम व्हेन द पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन द सराउंडिंग एरिया एंड द नियर बाय. नाउ द सेकंड पीरियड इज द मिडिल एज. जैसे हमने बताया कि मिडिल एज इज कॉल्ड एज ए डार्क एज इन द इंडियन टूरिज्म. और कभी कभी आप जब टूरिज्म पढ़ेंगे तो वी कॉल इट डार्क टूरिज्म. नाउअडेज वी कॉल इट डार्क टूरिज्म. डार्क टूरिज्म का बेसिक मीनिंग और बेसिक कंसेप्ट ये है कि व्हेन देयर इज एनीथिंग हैपेंड इन ए डेस्टिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन ए कंट्री और इन ए सोसाइटी, where there is a mass civil war, or you can say there is a assassination of any person or any leader, or you can say what you can say the disasters, say natural or accidental. तो हम लोग जब टूरिज्म को डार्क टूरिज्म डिफाइन करते हैं तो it means that. The example is that when Mrs. Gandhi was assassinated,
during that period, lots of travelers, those who were traveling in India, वो अपनी travel को छोड़ के they return back to their own country. क्योंकि it was not an assassination, but it was a riot which spread all over the country. इसी तरह आप देख लीजिए भोपाल गैस when it took place, after that there was a downfall of the tourism in India. ऐसे अब अगर इंटरनेशनल एरिना में देख लीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे सिविल वॉर हुआ या वहाँ पे कोई इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिससे कि टूरिज्म जो है खत्म हुआ या कम हुआ. अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इस पीरियड को हम लोग डार्क एज इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन द रोमन एम्पायर कोलैप्स. जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया तो लोग जो है डरे हुए थे. they were feeling insecure to travel. Obviously, जब आदमी इनसिक्योर, ट्रैवलिंग तभी होगा जब when you feel secure, either in your own place or your destination you are going to travel. तो obviously टूरिज्म जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम था उस समय. लेकिन जानते हैं ह्यूमन का एक नेचर होता है, whenever you are in a trouble, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? The first thing is that we pray to God. हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जिस दिन एग्जाम देने के लिए हम लोग घर से निकलते हैं उस दिन अपने घर से स्कूल के बीच में जितने मंदिर होंगे हम लोग वहां पे जरूर अपना माथा टेक लेते हैं. इट्स ए ह्यूमन नेचर बिकॉज इट इज ए फियर. और फियर में सबसे पहले याद आता है इट्स अ गॉड. तो जब रोमन एम्पायर का वो कोलैप्स हो गया तो सबसे पहले लोग क्या किए, सोचे कि यार भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इससे तो हम लोग को वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन. उस समय जो भी कोई ट्रैवलर था दे ट्रैवल टू द रिलीजियस प्लेस और होली प्लेस, जो कि मॉडर्न पीरियड में हम उसको कह सकते हैं पिलग्रिमेज. दे वेंट फॉर द पिलग्रिमेज, दे वर द पिलग्रिम्स, दोज हु मूव फ्रॉम देयर होम टू द प्लेस ऑफ वर्शिप. पीपल स्टार्टेड गोइंग टू बैथलेहम एंड अदर प्लेसेस, क्योंकि उनका मेन पर्पस था कि हमको भगवान को, अगर भगवान खुश रहेंगे, भगवान को खुश रखेंगे तो द थिंग्स विल बी बेटर. और जब वो रिलीजियस प्लेस के लिए ट्रैवल करना शुरू किए और जब वो अपने घर से दूसरे जगह पे गए तो जैसे हमने बताया कि व्हाट टूरिज्म मीन्स. टूरिज्म मीन्स व्हेन यू लीव योर ओन प्लेस एंड गो टू ए डेस्टिनेशन more than 24 hours, then only you will consider as a tourist. तो जब हम एज ए टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन में जाएंगे और more than 24 hours, the most important thing is a hospitality. You need hospitality. That means you need an accommodation. Hospitality में सब कुछ आता है, fooding, lodging and everything. But यहाँ पे the main basic was you need an accommodation. लेकिन उस समय तो accommodation का कोई concept नहीं था. तो उस समय जो लोग travel करते थे, basically they used to stay in a pilgrim's house, और उस समय लोग कहते थे charitable trust, जो आज के समय में हम लोग धर्मशाला कहते हैं. And this charitable trust was run by the religious organization. And it is very important that these charitable trust, they don't used to charge any money. आज के डेट में भी आप किसी धर्मशाला में चले जाइए तो वो आज वो थोड़ा चार्ज लेते हैं क्योंकि they want to run and maintain it. लेकिन इनिशियल स्टेज में in the beginning
when this charitable trust concept was started, तो वो कुछ चार्ज नहीं करते थे. जो भी पिलग्रिम्स रहते थे, जब वो अपना छोड़ के जाते थे तो वो कुछ डोनेट कर देते थे. To that amount which was donated by the pilgrims or by the travelers, I can say, they use that money for the maintenance of that very place. और आप और एक चीज नोटिस कीजिएगा कि whenever the people go as a pilgrimage, they always prefer to go in a group. आज भी आप देख लीजिएगा कि आप सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं देखिएगा, बल्कि इनबाउंड में देखिएगा, जो भी ट्रैवलर्स जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आते हैं, लाइक जापान, कोरिया, फिर ताइवान, फिर आपके कंबोडिया, लाओस, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज जो है वो इंडिया में आते हैं एज ए पिलग्रिम्स, क्योंकि हमारे country में Buddha was born and he preached his sermon and Buddha spread Buddha achieved nirvana here. तो इसीलिए ये जो pilgrims जो आज के डेट में इंडिया में आते हैं, they always come in a group. ये एक रीजन है कि because when they come, वो एज ए ग्रुप के साथ साथ वो अपने साथ अपने जो पुजारी है उनको भी अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि ये पुजारी जो है उनको हेल्प करते हैं हाउ टू डू द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज व्हेन दे विजिट टू द टेंपल्स. तो उस पीरियड में लोग जब ट्रैवल करते थे तो लोग जो है इस चैरिटेबल ट्रस्ट में रहते थे, और लोग जो है अपना जो भी और भी खर्चे जो है दे डू ऑन देयर ओन. इसीलिए जानते हैं आज के डेट में यदि आप किसी स्टार कैटेगरी होटल्स बुक करने के लिए जाएंगे, डू नो व्हाट दे आस्क? दे आस्क इन विच प्लान डू यू नीड टू बुक द रूम्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो. The present scenario is that when you go to any chain of hotels and if you book a room, they will ask you from which plan you want to book. और आज हमारे जो है होटल्स बुक करने के लिए जो है आपके 3 प्लान हैं. पहले 4 हुआ करता था, लेकिन अभी 3 प्लान है. पहले जो होता था वो था यूरोपियन प्लान. यूरोपियन प्लान में क्या होता है कि आपको सिर्फ रूम दिया जाएगा और कुछ नहीं इंक्लूडेड है. यू जस्ट कम एंड गेट अ रूम, जो कि आजकल छोटे छोटे होटल्स में दिखते हैं, लेकिन अगर स्टार कैटेगरी होटल में जाएंगे तो कोई भी होटल आपको यूरोपियन प्लान में नहीं मिलेगा. द सेकेंड प्लान कम इज ए CP, कॉन्टिनेंटल प्लान. इन ए कॉन्टिनेंटल प्लान it includes your room and your breakfast. आज आप किसी भी स्टार कैटेगरी होटल्स में जाएंगे अपने रूम बुक करवाने के लिए, they always tell you that the rate which they are putting is for the continental plan, that is room plus breakfast. तीसरा प्लान है that is called American plan, AP plan. अमेरिकन प्लान में आपका रूम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूड होता है. और चौथा प्लान है MAP, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान. मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में आपका रूम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट. तो वो हो जाता है MAP, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान. लेकिन आजकल पिछले 4-5 साल में MAP में बड़ी कंफ्यूजन है. उसका कारण ये है कि अधिकतर आप स्टार कैटेगरी होटल्स में देखिएगा तो लंच जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो विजिटर्स और ये टूरिस्ट आते हैं they used to travel during the daytime. तो यदि कोई अपने होटल से बहुत दूर किसी साइट सीइंग के लिए गया है, वो लंच के लिए अपने होटल वापस नहीं आएगा. तो जनरली
जितने टूर और ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रीफर करते कि लंच जो है उस मॉन्यूमेंट जहां पे वो लोग विजिट करने गए उसके आसपास कहीं पे लंच अरेंज कर दे. इट सेव टाइम एंड द अदर थिंग्स एज वेल. तो डिनर जो होता है वो गाला डिनर होता है. इट इज ए ग्रैंड डिनर. लेकिन डिनर की आजकल कॉस्टिंग जो है बहुत अधिक हो गया. When you have a grand dinner, it includes most of the things. तो आजकल वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि people don't prefer to give you MAP. MAP अगर होगा और यदि आप कहेंगे कि हम लंच लेंगे तो दे देंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हम लंच की जगह डिनर लेंगे तो दे चार्ज मोर. That's a different thing. Why I'm telling you the plan? हम जब कहते हैं यूरोपियन प्लान, that is the room only that was started from this period, from the Middle Age. That is the time when the charitable trust is to give just a room. इसलिए इसका नाम दिया गया था यूरोपियन प्लान. लेकिन जैसे हमने बताया कि आज के डेट में आप स्टार कैटेगरी होटल्स में जाएंगे तो यूरोपियन प्लान आपको नहीं मिलेगा. इस यूरोपियन टूर में लोग जब अपने घर से बहुत दूर ट्रैवल करना शुरू किए तो पीपल एज आई सेड मोस्टली दे आर द पिलग्रिम्स. तो वो सोचे कि अपने घर से जब हम दूर जा रहे हैं तो ऑल्सो दे वांट टू मेक इट लिटिल बिट ऑफ कंफर्टेबल. ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है पैकेज कंसेप्ट ऑफ पैकेज टूर स्टार्ट किए थे. पैकेज टूर में उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका एकोमोडेशन होता था जो कि हमने बताया कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट पे होता था. तो उसके लिए वो चार्ज नहीं करते थे बट कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते थे. तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट द पैकेज टूर स्टार्टेड ड्यूरिंग द मिडल एज. तो ये तो यूरोप में हो गया. लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड यूएस जो अमेरिका हम लोग कहते हैं वहां पे भी सिविलाइजेशन हुआ और पीपल्स वहां पे यूएस में सबसे मेन थिंग था कि सबसे पहले फ्रॉम द डे वन जब अगर अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिएगा दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड द रोड वाज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इनटू सम पार्ट ऑफ ब्रिटेन आल्सो. तो इस पीरियड में अमेरिकन्स और ब्रिटिश जो है दे यूज्ड टू ट्रैवल विद इन देयर कंट्रीज. और उस पीरियड में एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया था जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन से है, वो है टर्नपाइक. TURNPIKE. टर्नपाइक जो वर्ड खास करके अमेरिकन अभी भी यूज करते जो उस पहले जमाने 60s और 70s के हैं अभी भी वो कहते हैं टर्नपाइक. टर्नपाइक मतलब क्या है कि रोड में वो बीच में कहीं पे भी मतलब आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस दे यूज्ड टू पुट ऑन ए गेट और ए बैरिकेड्स. तो उसका पर्पस ये होता था कि ट्रैफिक वहां पे रुके एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट मनी, जो कि आज के डेट में मॉडर्न टाइम में हम लोग उसको कहते हैं टोल टैक्स. So toll tax was very much well developed in the US and it was first developed in the US first. अभी वहां पे वो जो है टर्नपाइक नहीं करते हैं. People used to say the toll plaza, toll tax or whatever it is. They use in a different words for that. लेकिन ये जो टर्नपाइक जो है सबसे पहले ये डेवलप हुआ इन यूएस. तो इसमें क्या जो रोड टैक्स जो कलेक्ट होता था दैट मनी वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स. Therefore, the roads in Britain and in the United States of America, it was such in a well shape and it became so popular that the people started traveling on road and they also started traveling in a coach. Coach means it is the bigger and the smaller as well. क्योंकि यूएस में दे यूज द वर्ड वेरी स्लैंग. कभी कभी आप यहाँ पे जो 7 और 8 सीटर्स गाड़ी देखते हैं जो हम लोग इनोवा ये करते हैं, दे से ओह दैट्स अ कोच.
तो जब वो कोच वर्ड करते हैं तो दे यूज द बिगर व्हीकल्स एंड द स्मॉल व्हीकल्स। तो इस टर्नपाइक रोड के कारण जो है आपका जो है कोच कंसेप्ट जो है ये स्टार्ट हुआ। तो ड्यूरिंग द मिडिल एज as I said, it is a dark age because just for the downfall or you can say for the Roman Empire. And the second thing is that during that period, people, as a traveler, they were the pilgrims. They used to go to the places like Jerusalem or Bethlehem. That was due to Christianity के कारण. And in Britain and in US, the turnpike road के कारण जो है the people used to collect money to maintain and develop the roads. Therefore, road transport also became very popular during that period. The third period or the third era we call as a Renaissance period. ये एक पीरियड है जो कि हमारे टूरिज्म हिस्ट्री के लिए इट इज द गोल्डन एरा। अब ये कहेंगे कि व्हाई यू कीप ऑन टेलिंग इट इज एन गोल्डन एरा, क्योंकि ड्यू टू द आर्ट एंड आर्किटेक्ट पीपल वांट टू ट्रैवल दोस प्लेसेस टू सी, और उसके कारण जो है the people those who traveled during that period, they were mostly considered as a wealthy people, क्योंकि वहां पे वो जब किसी आर्ट और आर्किटेक्ट देखने के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाते थे तो they used to spend a long time to study it, to see it in detail, and obviously these people were very rich, they were wealthy people. और जब कोई वेल्दी पीपल किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी जो है उस तरह का होगा, इट शुड बी वेरी लग्जरियस। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड द पीपल दोज हु ट्रैवल दे आल्सो वर लुकिंग फॉर द लग्जरियस एकोमोडेशन, एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन द लग्जरियस होटल वाज डेवलप्ड। जो हम लोग आज के डेट में भी आप जो है जो आर्किटेक्ट है द रेनेसेंस आर्किटेक्ट, वर्ल्ड में करीब 160 होटल्स हैं, जैसे मैरियट इज वन ऑफ देम, दे ऑल कम इन ए रेनेसेंस ग्रुप ऑफ होटल्स। और इस आर्किटेक्ट जो है इनके जब ये होटल्स बने तो दे हैव ए इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वेरी रेनेसेंस पीरियड। तो जब होटल्स की कंसेप्ट आया, लग्जरियस होटल्स से कंसेप्ट आया, तो ऑब्वियसली लोगों की स्पेंडिंग जो है वो भी बढ़ा, क्योंकि जब व्हेन दे यूज्ड टू गो फॉर टू स्टे इन द लग्जरियस होटल्स एट अ गुड एकोमोडेशन, ऑब्वियसली दे हैव सम अदर्स things which they need and the people started spending money. और इस होटल्स के कॉमर्शियलाइजेशन के कारण होटल्स बने और इनके ट्रैवलर्स जो वेरी रिच, दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रैंड टूर इन द ट्रैवल हिस्ट्री। Or the other interesting part is that during that period, people not only used to travel to study the art and architect, but people also used to go to England to study law. Or Queen Elizabeth II, इस period में she started a scholarship to attract the people to come to England to study law and to study the culture of England, of the Britain. So during that period, therefore, people, those who are travelers, they are wealthy, they were scholars. They used to spend more time in the destination where they visit. And obviously, जब wealth होगा, जब आप long destination पे रहेंगे, तो obviously the luxurious concepts come.
And that is the time when we have the concept of luxurious hotels, which is called as a Renaissance hotels. And as I said, at present now, we have more than 160. Marriott is one of them. Marriott hotel में जाएंगे तो always, अगर Marriott hotel का advertisement देखेंगे, they always say that we are in the Renaissance. Recently, they have opened a hotel in Lucknow, which they call as a Renaissance Hotel Marriott. So because they brought that very concept, the Greek concept, the pillars, फिर उसके बाद उनके और भी इंटीरियर डेकोर जो है वो इज अ वेरी मच रेनेसेंस पीरियड. अलग अलग पीरियड में टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग द British period we used to call it a Victorian architect, the Victorian era. Therefore, is a Renaissance period. The architect, the hotels they made it called as a Renaissance architect, which is very famous nowadays. People feel very proud when they go to, especially the European people, they love to stay in the Renaissance hotels. Americans, they don't like. Americans' concept it should be very different. It should be modern with more facilities rather than they don't go much on the architectural aspects. So this is the period when the Renaissance group of hotels started. And this period is also called as the Grand Tour, because that's the time when the hotels and halls came up. और सबसे इंटरेस्टिंग इस पीरियड में और एक चीज है जो हम लोग अक्सर यूज्ड टू से कि दिस इज द टाइम व्हेन द कांसेप्ट ऑफ लेजर टूरिज्म स्टार्टेड. So these are the reasons why we call this period as the golden era of the tourism industry. The fourth period is called as the industrial period. This is the time when, due to the industrial revolution and due to the industries, the towns which earlier used to call as an agriculture town, क्योंकि वो टाउन के चारों तरफ बहुत अधिक इंडस्ट्रीज नहीं होते थे, तो they used to call as an agriculture town. But that industrial period, the town has become that industrial town. उसका कारण है कि जैसे कोई इंडस्ट्री आए तो they need laborers. Obviously, when the laborers came, demand of the laborers gone up, the society was converted from the rural to the urbanized. And these agricultural cities, which was earlier known as, they were now started calling as the industrial cities. Industrial cities में not only they need a big hotels, but they need another recreation surrounding the areas when the traveler visit to that very place. और इस period में, due to the technology, the mode of transportation, there were lots of other options for the mode of transportation, like train, which was very often used, road transportations, and the jet, the aircraft. Because during the industrial period, the World War I and the World War II was taken place. And during the World War, they used the jet plane. And this jet plane, they started converting them into a civilian jet. And the development of aircrafts. These aircrafts also promote the tourism. And during that period, the two major companies, they came up, those who make aircraft. One is a Airbus and second is a Boeing. अगर आप किसी भी एयरलाइंस को देखिएगा, the airlines only use two aircraft made by two different countries. Airbus, which is made in France, and Boeing is made in US. So during that period, due to Airbus and Boeing, the aircrafts saved time and the people started traveling. So this is the era where you can say is a modernizations of the tourism industry.
And other important thing is that during that period, when the modernization of tourism started, the tour company started booming. And in the travel industry, the first tour company, आप बता सकते हैं कोई भी, which is the first tour company in the travel history? Anybody? Anybody can tell me which is the first tour company? Hello, can you all hear me? Hello? Hello? Am I audible? Anybody? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me which is the first tour company? Sir, I think it's Cox and Kings, sir. No, Cox and King came much later. Is it Thomas Cook? Oh, yeah, Thomas. You picked up with Cox and King. Is it Thomas Cook is the first tour company in the modern times, still they operate. Actually, the story of the Thomas Cook is that Thomas Cook was born in England in 1808. He left school at the age of 10 and he started working in a vegetable farm, making a little bit of money. Then he had an idea to take the travelers, because when he was at the age of 10 and when he saw that in this society the biggest problem was the alcoholic problem, people used to drink too much. And in those periods, the people, they used to travel within the 20 miles of the surrounding area where they live. That is from the home to their office and back. Therefore, it was Thomas Cook who decided, why don't he take these people away from home, particularly the people, those who have alcoholic problem, to take away so that they can be away from drinking. And it was said that he approached the railways to give some coach so that he can take the people traveling from the hometown to some place so that they can have a vacation. And the railways gave in a couple of coach, or they used to call it a car, but nowadays in India we call it a coach, and he took the travelers. 3 years later, the railway company says, okay, you can our coach, but you have to mark it for us. And Thomas Cook was very happy to do that. And he said that when he started his tour, he used to take the travelers, those are from the middle class. And during that period, he started the concept of escorted tours. Escorted tours are very popular even nowadays. Escorted tours में क्या होता है, जब आप tour करते हैं तो there used to be a staff. He is the one Therefore, that was the first time in the travel industry when the solo woman, the single woman, the aged single woman started traveling. And its credit goes to Thomas Cook. And later on, Thomas Cook also focused on the royals and on the rich people. And this is how the Thomas Cook, the concept was started by Thomas Cook, and later on it was taken over by his son. And nowadays still we have a Thomas Cook
tours and travel company. But Thomas Cook now, they are not focusing more on travel. They are more focusing on the foreign exchange. At any airport, if you go, you will find a Thomas Cook foreign exchange counter at the international airport. Later on, it was taken over by Kony. Kony is another European tour company, but again, there was some problem within the family, and now Thomas Cook is in the travel industry. But as I said, there are very few. They operate groups or the tourists, but mostly they are in the foreign exchange. So that he is the founder of the modern tourism. Therefore, Thomas Cook brought the concept of organizing tour, and he brought the concept of travel agencies. What is the role of travel agent? How they operate, and how they make the travel more comfortable. Therefore, nowadays, even the people, those who travel, most of the people, those who take the organized tour, mostly they are the elder people. We don't use the word old people because, particularly the Americans, they don't like to call them old. They think it is something disrespecting the person. So they say elder people. Therefore, these are the elder people, those who always try to travel in organized group. And when the travelers travel, either they travel in a group or they travel as individuals. And when they travel in a group, which is cheaper than traveling individuals. Some countries, they prefer to travel in a group, like Japan, Koreans, Italians, mostly the European countries. Why? Because it is not that they want to save money. The biggest problem for them is a language problem. Therefore, they always try to travel in a group, and when they have a big group, it is an escorted group. They have someone from the company he is the one who take care of the day-to-day activities of the total itinerary which has been given to them. He coordinates with the vendors, and even he explain and give the historical background of the country or the destination they travel. So those are the group concept. Individual groups are mostly people, those who are English-speaking countries, because they can communicate. As I said, when you travel, you need two things. First is the money, the currency, second is the language. Therefore, while traveling, nowadays traveling has become much easier, because earlier days, I remember, people used to carry the traveler's check, which is issued by the bank, the American Express Bank, they used to issue it, and people used to use the traveler checks. Or they used to their currency, that's international currency, dollars. But now with the credit card and the debit card, it has become more easy. People don't have to carry the currency with them. They need a little bit, but not much. Therefore, it is an organized tours. The concept of organized tour in present modern tourism, which we say, it was brought by Thomas Cook. And now we have many other tour companies. Then after Fox and King, as you said, some of you, it is true. We have a company like Thomas Cook, Fox and King. These are the European-based tour company. And we have the other companies as well. Similarly, from the outbound, it means Indians, those who go outside the country, we have SOTC and the others companies are also there. Those who take the tourists from India to abroad, which we call as the international outbound tourist. Now, most of the tour companies are merging with the other small tour companies, and they became a giant tour companies. In US, there are many markets. The richest people in the United States, those who travel, is called TAUC, T-A-U-C-K. TAUC is one of the most expensive tour
taken by an American to travel anywhere in the world. Then there are other tour companies. These all are the organized tours. The other tour companies are the OAT. I don't know whether you heard it or not. Is Overseas Adventure Travel. They have a head office in Boston. And the other tour like Road Scholar. They also have a Boston. The concept of the Road Scholar is that to take the travelers to any destination, not as a tourist, but to also to educate the local culture to these tourist travelers. And we have other like RDC and other things. The cheapest tour company in the United States, the organized tour companies, there are many, but one is the Gate One, which nowadays they are doing very good business in India. They operate more than 300 groups in a one tourist season. And in India, the tourist season starts from October to March. So these are the organized tour, which I'm talking about the inbound. Similar for the outbound, we have SOTC and we have the Thomas Cook also. They do the outbound. We have a Divan Tours and Travels. These are the we have a Mercury Tours and Travels. These are the outbound tours. They take Indians to the Europe and other part of the world. Well, that was the time when Thomas Cook developed the concept of a modern tourism. Now, the fifth one and the last one is the modern tourist. As I said, modern tourists are more well educated, they are very rich, they are good travelers, and in the modern time, we come across many travelers, those who travel in a one destination for more than 5 or 6 times. Because every time when they come, they get a different experience, they learn the different culture. Therefore, modern tourism, it is basically for the educated and for the richer people, for the richer. It is a fast growing. And if you see the contribution for the socio-economic contribution of any country, the modern tourism is doing well, particularly like in India. Due to the pandemic, it has gone down. It is almost shut down because international flights are not operating. Otherwise, the tourism industry was booming. And later on, I will discuss the Incredible India, the slogan given by the Ministry of Tourism, Government of India, has boomed the tourism industry. And when these tourists come, as I say, they not only study the culture, the history, the custom, but the heritage. Nowadays, I have seen most of the tour operators, they are focusing on the heritage. आप बनास में आइए, बनास में अगर आप वेबसाइट में देखिएगा, गूगल कीजिएगा, बनास में 7-8 heritage tour करके they are selling heritage tour. They are the small companies, those who are selling heritage tours. They take to these narrow alleys and show these heritage buildings, architect, the people, even they have some selected somehow where the group used to go and they have some tea and coffee with the group, with the host. It is a kind of giving them the cultural experience when they go for the and to show the monuments as well. Or यदि आप लोग कभी some of you are from Varanasi, if you walk through the narrow alleys from Sonarpura to Dasasamet Ghat, from that Bengali Tola area, you can find lots of things. So those are the one which is a part of the modern tourism. Modern tourism are going off the track. Also, they are more adventurous, like mountaineering, trekkings. These are becoming very popular nowadays. Modern tourism, I will discuss in a later on in some other chapters in detail. How it's developed, what kind of tourism we have, like ecotourism, beach tourism, and other things, which I will talk in detail. So that is the historical development of the tourism, how it's developed from the prehistorical era to the modern time. Okay. Any of you have any questions regarding the tourism or the whatever I have shared with you all? Anybody?
Hello. Okay. Okay, that's fine. I will sign it off, and tomorrow we will discuss another chapter from this. You know, when I'm giving all this detail, I'm not covering much of the theoretical aspect. Theoretical aspect आप अपनी किताबों से आप बहुत सारी चीज आप collect कर सकते हैं. But I'm giving you the practical things which you can correlate it with the theoretical aspects, and then you understand exactly what the concept of tourism and how tourism is related to the heritage, so how they are going together. So that's my purpose, that I always give you a practical example so that you can understand in a better way. Okay, that's fine. Okay, sir. Thank you so much. Bye bye, and see you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Bye. अश्विनी भाई, हेलो। हाँ हाँ भाई। अश्विनी भाई, आज गए थे कॉलेज क्या आप? सर हम इलाहाबाद हैं सर अभी। अच्छा, इलाहाबाद में है। हाँ सर। ओके। सर रात में आए थे। ओ, हाँ। एक एग्जाम है क्या सर आपका? सर हाँ, मेरा एग्जाम है सर। ओ, उसी के चक्कर से उसी के लिए आया है। ओ, अच्छा अच्छा। और सर कहाँ है? आपसे बात नहीं हो पा रहा है। सर हम पटना में है, सुनिए। नहीं, बात नहीं हो पा रहा है कॉल पे। कॉल करने की रिसीव नहीं की, तो फिर बात नहीं हो पाया। हाँ, उस दिन शादी में थे।